So control of BP can be divided into three types: the short-term control, which occurs within seconds to minutes; intermediate, 30 minutes to hours; and the long-term, which is mainly the renal control. It can stay as long as possible. ठीक है, मतलब जब तक जरूरत होगी ये mechanism act करेगा. It is always there. So long-term control, that is the renal regulation of the blood pressure. So one is the direct effect of the kidneys to control the BP. वो जो मैंने आपको कहा था कि जब भी BP increased होता है, whenever the blood pressure increases, so the glomerular filtration rate will increase, more and more urine will be formed. Plus, if the pressure in the glomeruli increases, so the sodium will be excreted more. अगर बहुत ज़्यादा sodium जाएगा urine में, तो osmolality of the urine will also increase. और जब sodium जाएगा, तो osmotic osmosis की वजह से it will also attract water and take it along with it. So in this way, the BP will come back to the normal level. Now we'll come to the indirect mechanism, which is known as the Rennin Angiotensin system. This is a very important system, बच्चे मैं बार बार कह रही हूँ, you should remember it. It always comes in the MCQs, and मैं मैंने एक MCQ put के in order to show you how it can be utilized. Plus Viva में भी regularly they ask it. So इसका पूरा नाम जो है वो है the Rennin Angiotensin Aldosterone system. तो इसको RAAS भी कहते हैं, the RAS system. ठीक है? So what are the components of this system? Number one, it is the renin. Renin, which you remember, it is an enzyme which is formed inside the kidneys. So this system जो है renin angiotensin aldosterone system, ये तब act करता है whenever the blood pressure decreases. मतलब increase होगा तो this system is inhibited. So the reverse will occur. लेकिन जब भी blood pressure decrease होगा तो this mechanisms will prevent the decrease or the fall in BP and bring it back to the normal level. So renin is synthesized and stored in an inactive form, prorenin, in the juxtaglomerular cells of the kidneys. So prorenin, जैसे मैंने आपको बताया हुआ भी है कि जब भी प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द रफ वन, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इनिशियली इन द इनएक्टिव फॉर्म. इसको हम प्रोरेनिन कह सकते हैं. इस तरह से प्रो हार्मोन्स भी होते हैं. जब हार्मोन्स बनते हैं तो फर्स्ट दे आर इन द इनएक्टिव फॉर्म, फिर फर्दर दे व्हेनेवर द नीड अराइजेस दे आर प्रोसेस्ड, अमाइनो एसिड्स आर फ्यू रिमूव्ड फ्रॉम इट एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म. सो रेनिन एंजाइम, ये याद रखिए, renin is an enzyme which is secreted by the kidneys in response to a fall in the blood pressure. This is the main thing. So whenever the arterial pressure or the blood pressure decreases, many of the prorenal molecules split and they release renin. See? So when BP falls, renin will be released by the kidneys. Now what's the action of renin? Now this diagram, you can see this is kidney. Whenever the blood pressure falls, so renin will be secreted, and renin is an enzyme. ठीक है, इस तरफ भी आप देख लें, ये किडनी है और यहाँ पे पर्पल कलर में जो है, this is the renin enzyme which is secreted in response to a fall in BP. Now there is another protein. This is a picture of the liver. ग्रीन में लिवर दिखाया है. ठीक है, उसमें एक प्रोटीन बनता है which is known as angiotensinogen. ठीक है, so angiotensinogen is a protein that is formed in the liver and it is in inactive form. So if the BP falls, renin will be secreted by the kidneys, this enzyme. So this will act on this protein, angiotensinogen, and it will convert it into angiotensin 1. Angiotensin 1 is a vasoconstrictor. ठीक है, vasoconstrictor ये होगा कि ये blood vessels की constriction और increase करेगा. So naturally the blood pressure will increase due to increase in the total peripheral resistance. But angiotensin itself is very weak vasoconstrictor. ठीक है, so naturally it has to be converted into a very powerful vasoconstrictor which is known as angiotensin 2. ठीक है, यहाँ पे नीचे जो आया है, this is angiotensin 2. Now the enzyme required for this conversion angiotensin into angiotensin 2 is known as angiotensin converting enzyme, या आप कह सकते हैं short ACE. ठीक है, so angiotensin converting enzyme will convert angiotensin 1 into angiotensin 2. Now this enzyme is secreted by the lungs. This action will occur in the lungs. तो तीन organs हमने discuss कर दी. Kidney के साथ renin है, angiotensinogen जो बनता है inactive में, that is in the liver, and the enzyme for converting it angiotensin 1 into 2 is ACE, which is secreted by the lungs. Now this angiotensin 2
फर्दर एक्ट्स, ठीक है। इसके अब डायरेक्ट एक्शंस भी हैं और फिर इनडायरेक्ट भी है। एक तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा कि इट इज़ अ वेरी पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर, इट विल प्रोड्यूस वेजो कंस्ट्रक्शन थ्रू आउट द बॉडी, so the total peripheral resistance will increase, so obviously the blood pressure will also increase, plus it also causes a mild constriction of the veins, so obviously the veins they are like flaccid tubes, अगर उसको प्रेस करेंगे तो जैसे आप नीचे जैसे बड़े बड़े वेन्स उनको प्रेस कर दें, so the venous return to the heart will increase, and again this will lead to increased cardiac output and increase in the BP. But it has got an indirect effect as well. It will act on the adrenal glands and secrete aldosterone, which is a hormone. So I'll now will further proceed. So renin enters the blood, which is secreted by the kidney, circulates throughout the body. Renin then acts, it's an enzyme, so it acts enzymatically on angiotensinogen, which is formed in the liver and converts it to release angiotensin 1. Angiotensin 1 has a mild vasoconstrictor property itself also. Now renin, Gigi. मैम एंजियोटेंसिनोजिन की कन्वर्जन इनटू एंजियोटेंसिन 1 ये हमारे पास कहाँ पे होगी, ये क्या ब्लड में होगी? नहीं 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 बच्चे, ये लिवर में मतलब ब्लड में तो होगी, लेकिन दिस इनएक्टिव फॉर्म जो है ना एंजियोटेंसिनोजन जो बनता है, दैट इज फॉर्म इन द लिवर, सो द ब्लड व्हेन इट रीचेस द लिवर इट विल कन्वर्ट इट इनटू एंजियोटेंसिन 1 which will be then released into the blood, मतलब इट विल सर्कुलेशन है, लेकिन दिस ब्लड पास थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स ना, ठीक है बच्चे। ब्लड है जब वो किडनी से होके जाएगा तो इसमें रेनिन आ जाएगा, यही ब्लड जब फिर लिवर के पास जाएगा तो वहाँ पे एंजियोटेंसिनोजन है, वो कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1। दिस ब्लड व्हेन इट रीचेस द लंग्स, तो वहाँ पे एंजाइम है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, so it will convert it into angiotensin 2. So blood is circulating throughout the body and different organs, these different mechanisms are occurring. ठीक है बच्चे, अब समझ आ गई? मतलब vessels के अंदर नहीं रहेंगे, ठीक है। So the renin then persist for in the blood for 30 minutes to 1 hour, और जब तक ये blood में होगा renin, it will continue to form angiotensin 1, मतलब angiotensin बार बार बनाता जाएगा। So within a few seconds to 1 minute after the formation of angiotensin 1, two additional amino acids are split from the angiotensin to form angiotensin 2. अच्छा, जो प्रोटीन्स बचे होते हैं ना, जब इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म और फिर फर्दर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, इनका यही होता है कि फर्स्ट दे आर फॉर्म लाइक लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स which are initially inactive. So some of the amino acids are removed from it, so it's converted into one form, and then a few more amino acids are removed, then it is converted into another form. ठीक है? So this conversion then occurs inside the lungs. Now the blood is passing through the lungs, so there is enzyme which is known as angiotensin converting enzyme, or आप briefly इसको कह सकते हैं ACE, that is present in the endothelium of the lung vessels. Lung vessels के endothelium में होगा. So when this angiotensin touches that, it will be converted into angiotensin 2. Now, angiotensin 2 is an extremely powerful vasoconstrictor. It will produce vasoconstriction throughout the body. It persists in the blood only for 1 to 2 minutes because it is then rapidly inactivated by multiple enzyme angiotensinase. अच्छा, इस तरह से होता है बच्ची बॉडी में अगर कोई भी केमिकल रिलीज होता है तो उसके लिए फिर अगेंस्ट उसको रिमूव करने के लिए देयर ऑलवेज एंजाइम्स। ये इसलिए है कि अगर जब तक वो रहेंगे तो अपना एक्शन करेंगे। जैसे अगर आप लोगों ने साइनेप्स पढ़ा है कि नहीं अभी पढ़ा बच्चे? हमने एमएससी में पढ़ा थी। अच्छा, उसमें भी होता है ना कि जैसे एसिटाइलकोलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है तो थोड़ी देर बाद एंजाइम्स उसको डिग्रेड कर देते हैं, क्योंकि जब तक एसिटाइलकोलिन रहेगा तो वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट करता रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर वेसोकंस्ट्रिक्टर जो है एंजियोटेंसिन 2, इट परसिस्ट इन द ब्लड फॉर वेरी लॉन्ग, सो इट बी वेरी हार्मफुल, क्योंकि थ्रू आउट वेसोकंस्ट्रिक्शन और वाटर रिटेंशन कॉज करेगा। लेकिन तो इमीडिएटली 2 मिनट्स के बाद फिर ये बॉडी से रिमूव हो जाता है। इन 1 to 2 मिनट्स में ये काफी एक्शंस कर लेता है। अच्छा, एंजियोटेंसिन 2 फर्दर आप कह सकते हैं कि इट हैज गॉट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, ठीक है। डायरेक्ट इफेक्ट में नंबर 1 है वेसोकंस्ट्रिक्शन थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। सो कंस्ट्रिक्शन ऑफ arteriole will lead to increase in TPR, that is the total peripheral resistance, which will then increase the blood pressure. Mild constriction of the veins will further increase the venous return to the heart, और अगर venous return increase होगा तो cardiac output increase होगा, cardiac output increase होगा, so the BP will come back to the normal. अच्छा, अब इसका दूसरा इफेक्ट देते हैं। एक तो वेसोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। I think after some time I'll do this with you, पहले आगे जाते हैं। So effect of angiotensin in kidneys to cause renal retention of salt and water. One was the vasoconstriction. The other effect is to make the kidneys retain salt.
Obviously, if salt is retained by the kidneys, so due to osmosis, the water will also be reabsorbed from the renal tubules, and this will lead to increase in the plasma volume या extracellular fluid आप कह सकते हैं. So angiotensin 2 causes retention of salt and water by kidneys again in two ways. Directly and indirectly. Directly ये मतलब है कि angiotensin 2 will directly act on the kidneys and make it retain सोडियम. सॉल्ट से इनका मेन ये होता है कि सोडियम आयंस जब रिटेन होते हैं बच्चे तो उसके साथ ऑटोमेटिकली क्लोराइड नेगेटिव वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो जब सोडियम क्लोराइड रिटेन होता है तो नेचुरली ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो वाटर इज ऑल्सो रीअब्सॉर्ब. अच्छा, इनडायरेक्ट इसका एक्शन जो है दैट इज थ्रू अ हार्मोन which is known as aldosterone, which is secreted by the adrenal glands. Inshallah, aldosterone will be taught to you in very detail in second year when you will be doing endocrinology. यहाँ पे मैं shortly उसके आपको mechanisms बताती हूँ. So direct effect इसमें अगर आप देख लें, number one, angiotensin acts directly on the kidneys to cause salt and water retention. Angiotensin causes adrenal glands to secrete aldosterone. Aldosterone जो है, it is secreted by the adrenal cortex. The adrenal glands are two glands in number, which are present on the upper pole of the kidneys in each and every one of us. अगर आप अंदर से इसको देख ले तो बाहर साइड पे इसका कैप्सूल होता है, इनसाइड में इसका एक मेडुला होता है और एक इसका कॉर्टेक्स होता है. सो मेडुला जो होता है वो मेनली सिक्रीट करता है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. कॉर्टेक्स में फिर ये डिफरेंट हार्मोन्स आते हैं जिसको हम मिनरेनो कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये सारे कहते हैं. आई वोंट गो इनटू द डिटेल, लेकिन aldosterone is secreted by the adrenal cortex. It is also known as the mineralocorticoid. Corticoid नाम इसलिए है कि it is secreted by the cortex of the aldosterone. और mineralo नाम इसका ये है कि its main action is to act on electrolytes. ठीक है, मतलब अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहीं नाम लिखा होगा that means corticoid secreted by the adrenal cortex. Gluco means which acts on the glucose. लेकिन यहाँ पे mineral है so it acts with sodium ions. तो एल्डोस्टेरोन की किडनी पे ट्यूब्यूल्स पे दो एक्शंस होते हैं. नंबर वन, इट कॉजेज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है इट कॉजेज एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम. लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम बीपी की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन पे कंसंट्रेट करेंगे. सो aldosterone when it acts on the renal tubules it will lead to reabsorption of sodium ions. Sodium ions are positively charged, so when these are moving inside from the renal tubule they are moving into the